Hello friends, welcome to Exploring Goals once again. Friends, ଆଜିର ଏଇ ଡିସ୍କସନ୍ ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଯୋଉଠି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତ ବିଫୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନ୍ୟୁ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ then definitely subscribe and hit bell icon so that you will get all my live and uploaded videos. Let's start this important session on Indian polity, Supreme Court for all different competitive examination. These MCQs will be very important. So let's begin. Question number 1. When there is a vacancy in the office of the president and the vice president at the same time, the office is held temporarily by. जेतबेले president एवं vice president दि जण जाक absent अछंती सेतबेले president करो जो office को किए office रो दायित्व किए नेबे. Question number 1 रो right answer the chief justice of India. Next, question number 2, consider the following statements. The Supreme Court of India tenders advice to President of India on matter of law of fact. So, Supreme Court of India advice देई परिबो President को case रे तीनटा statement अछि. Number 1, on his own initiative, on any matter or of larger public interest, if he seeks an advice only if the matter relates to fundamental rights of the citizens. So, out of the three statements, which is or which are correct? Question pacharchi. Co statement correct achi. Question number 2, right answer about 3 only means Supreme Court advice dei paribo president ko only if the matter relates to fundamental rights of the citizens. Okay. Next, let's move on. Question number 3. Salaries of judges of Supreme Court are determined by. Right answer is Parliament. Question number 4. Which article of Constitution permits the Supreme Court to review its own judgment or order? Review its own judgment or order. Supreme Court निज order को निजे review करिबार विषय रे केउ आर्टिकल रे दर्शा जाइछि. आर्टिकल 137. कन्स्टिट्यूशन परमिट करूची मीन्स कन्स्टिट्यूशन परमिट करूची सुप्रीम कोर्ट को जे जो लॉ बा जो जिनस कि सी कंक्लूड करि सारिछि बा जजमेंट दे सारिछि ताकू रिव्यू करि पारिबो अंडर आर्टिकल 137. क्वेश्चन नंबर 5. द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर. सो सुप्रीम कोर्ट रो पावर अछि जहा द्वारा कि सी सेंटर और स्टेट भीतर थिबा डिस्प्यूट्स को समाधान करि पारिबो. ये का अंडर रे आसुची? ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर रे आसुची. क्वेश्चन नंबर 6. हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? जे कोनोसी केस को जे कोनोसी जगह को ट्रांसफर करिवार क्षमता अछि सुप्रीम कोर्ट रो. बी राइट आंसर. 7. The disputes regarding the election of president and vice president of India are decided by. Vice president president related जतो dispute होची election रो तार decision supreme court ही नहीं थांती. Question number 8. Who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court of India on any question of law? तो advice नहीं पारिबे के Supreme Court को ठारू. Right answer is president. 9. Who is custodian of Indian Constitution? Right answer is Supreme Court. Question number 10. The Supreme Court of India was set up by the. Right answer is Regulating Act 1773. तो ये क्वेश्चन रो आंसर टिके वेरीफाई करके निश्चय जणैबो. एंड चार्टर एक्ट 1833 ये को का सहित रिलेटेड कमेंट बॉक्स रे मते जणैबा को भूलिबोनी. क्वेश्चन नंबर 11. In the Supreme Court of India, the number of judges including Chief Justice is now. So number of judges वर्तमान अछंती 32 and highest रही पारिबे केते 34. Highest रही पारिबे 34. Okay. Question number 12. Who is the final authority to interpret the Constitution? Right answer is the Supreme Court. Question number 13. Who was the Chief Justice of India when public interest litigation PIL was introduced to Indian judicial system? किए चीफ जस्टिस थिले जेतेबेले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंट्रोड्यूस करा जाइतिला इंडियन जुडिशियल सिस्टम को. राइट आंसर इज PN भगवती
अगस्त 1985 रे इंट्रोड्यूस होइतिला PIL into Indian judicial system. Question number 14. Which one of the following subjects comes under common jurisdiction of Supreme Court and High Court? Right answer is Supreme Court of High Court. These are the kartavya protection of fundamental rights. C is the right answer. 15. What does the judicial review function of Supreme Court mean? Right answer is examine the constitutional validity of the laws. Examine constitutional validity of the laws. Okay. Next, question number 16. The Chief Justice of Supreme Court is appointed by the President in Constitution with the judges of Supreme Court and High Court. The Chief Justice of Supreme Court President का द्वारा अपॉइंट हुई in consultation with judges of Supreme Court and High Courts. Question number 17. Who of the following Chief Justice of India acted as President of India also? तो गोटे केस रे ही प्रेसिडेंट हिसाब रे फंक्शन करी परिबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो केस रे ना प्रेसिडेंट थिबे ना वाइस प्रेसिडेंट थिबे जेतेबेले दी जण जाक नथिबे सेतेबेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फंक्शन रे रहिबे सो एठी राइट आंसर इज जस्टिस एम हिदायतुल्लाह. जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जेतेबेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थिले सेतेबेले प्रेसिडेंशियल चार्ज रे थिले. ये घटना होची मे 1969 रो जेतेबेले जाकिर हुसैन कर डेथ हेतिला प्रेसिडेंट थिला बेले. ओके जाकिर हुसैन कर डेथ हैला परे सेतेबेले वाइस प्रेसिडेंट थिले वीबी गिरी एंड वीबी गिरी सेतेबेले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे ठिया हबा पई वाइस प्रेसिडेंट पदरु इस्तीफा देथिले. तेनु जाकिर हुसैन का डेथ तापरे वीबी गिरी इंचार्ज थिले प्रेसिडेंट रो बट सीए प्रेसिडेंट रो इंचार्ज रु इस्तीफा देकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पई जो मनोनयन होतला स्टांड करथिले प्रेसिडेंट इलेक्शन रे. तेनु जेहेतु प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नथिले जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थिले जदियो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी प्रेसिडेंट चार्ज रे से टाइम रे थिले. क्वेश्चन नंबर 18. ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ. बहुत पॉपुलर क्वेश्चन टा. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो जज 65 इयर्स जदि हाई कोर्ट थांदा 62 ही थांदा. ओके हाई कोर्ट रो जज 62 इयर्स रे रिटायर करंती. ओके हाउ कैन the number of judges in Supreme Court in India be increased? Supreme Court of India रे judges का संख्या केमिति बढ़ा जाई पारिबो? Right answer is by amendment of the constitution. Constitutional amendment आने की बढ़ा जाई पारिबो. Question number 20. In which year Supreme Court of India came into being? जेतबेले came into being अछि Supreme Court of India सेतबेले right answer होउची जनवरी 26 1950 रो 2 दिन परे माने जनवरी 28 1950 is the right answer. So C correct. These are 20 most important questions about Supreme Court of India. आगो को मध्य बहुत important questions अच्छी. 28 January 1950 रे 2 days after becoming sovereign democratic republic the Supreme Court came into being. So my dear friends एमिति आगो को मध्य questions आसीबो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कस करबा. तेनु जदि चैनल रे नुआ अछो वर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करी बेल आइकन हिट करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो सो दैट सब वीडियोज मिली पारिबो. किछि भी डाउट अछि मते व्हाट्सएप करी पारिबो 8917214900 ए नंबर रे. एंड फ्रेंड्स समस्त निश्चित रूपे वीडियो को लाइक कमेंट एंड फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करिवो. लाइक कमेंट करी निश्चित मते एनकरेज करिवो सो दैट आई विल ब्रिंग मोर एंड एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज फॉर यू for your upcoming examination. Thank you. Have a great day. Take care. Jai Jagannath.